हेलो क्लास फिफ्थ स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 33, स्पीच विदाउट साउंड, द साइन लैंग्वेज। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे साइन लैंग्वेज के बारे में, जहां हम साइन करते हैं, साइन इशारा करते हैं विदाउट स्पीकिंग। रिमेंबर, एज आ toddler, when we were kids, when we were toddlers, जब हम छोटे थे, जब हम 1 2 3 साल के थे मात्र, you would point a toy if you wanted it or show your little finger when you wanted to use washroom। जब हम छोटे रहते हैं बच्चों, जब हम बोल नहीं पाते हैं, या आपने देखा होगा आपके छोटे भाई बहन तो वो चीजों से इशारा करते हैं कि उन्हें वो चीज चाहिए या उन्हें वॉशरूम लगी है, या वो कुछ फेशियल एक्सप्रेशन साइन देते हैं। We all have used a little sign language in our lives, but people who are impaired of hearing, but बच्चों, कुछ लोग जिन्हें सुनाई नहीं देता है, जो impaired है, जो बहरे हैं, वो बच्चों, वो और बहरे हैं और गूंगे भी हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, deaf और dumb हैं, impaired हैं, तो वो भी sign language का इस्तेमाल करते हैं। Now let us learn more about the evolution of sign language as an important tools for our conversation. Now here, fill in the blanks is given to you. We have to choose the right answer. Number 1, sign language is communicating through body movements. Sign language मतलब बच्चों body movement से communicate करना, especially by arms, यानी कि हमारे हाथों के थ्रू कम्युनिकेट करना। when spoken communication is either not possible or not desirable. Next we have, it is actually dash, then speech, it is also entails basic body language, so it is actually older than speech। ठीक है, बोलने से पहले हम बच्चों इशारा करना सीखते हैं, तो it is older than speech and it is also entail basic body language like facial expressions, then we have grimaces, then we have shrugs or pointing. Next we have, whenever vocal communication is impossible, बच्चों जब हम नहीं बोल पाते हैं, या बेसिकली यहाँ उन लोगों के बारे में बात हो रही है बच्चों जो impaired हैं, जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते हैं। So like between people with different languages or when we or more is deaf, so हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं बच्चों? हम इस्तेमाल करते हैं वहां जिस चैप्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, साइन लैंग्वेज। सो साइन लैंग्वेज कैन बी यूज्ड टू ब्रिज द गैप। Next we have the fourth one, dash and dash, French and German, Chinese and Japanese. So Chinese and Japanese, whose languages use the same body of characters but pronounce them differently, can communicate by means of sign language in which one watches while the other traces character on his or her palm. Then we have the fifth one. It was long thought in many cultures that the deaf could not be taught. A few teachers were available only to wealthy. ठीक है, बहुत पहले की बात है बच्चों, जो डेफ होते थे, जिन्हें सुनाई नहीं देता था, तो उन्हें पढ़ाने के लिए जल्दी कोई टीचर नहीं होता था, केवल जो रिच फैमिली के इम्पेयर्ड बच्चे होते थे, इम्पेयर्ड ऑफ हियरिंग एंड स्पीकिंग, बस वही पढ़ पाते थे। Then we have the sixth one, FSL become the precursor of American Sign Language, ASL, and many other national sign languages. FSL was brought to United States in 1816 by the option number Thomas Gallaudet, founder of American School for the Deaf in Hartford, Connecticut. Then we have the seventh one. ASL is the fourth most common language used in USA. Okay, dear learner, this chapter was very good, and today we have learned about that people who are impaired of hearing, impaired of speaking, they use sign language. And dear learner, we should always show kindness and we should always show empathy towards such kind of a people who have some disability and they are especially able. Your exercises and chapters complete here. We will be seeing you in another general knowledge class. Till then, take care of yourself. Thank you so much. Bye-bye.